when a rocket moves and it tries to accelerate, there's another mechanism which is helping it to move up with higher and higher speed, or move in any direction at higher and higher speed. So initially we are looking at a scenario where a rocket is in free space, somewhere in free space, and it's trying to accelerate. So what a rocket does is it has a large amount of fuel inside, and that fuel burns, and as a result of that burning of fuel, fumes are ejected out. So the burnt fuel, which are in the form of fumes, which you see a lot of these days in Lahore, for example, they are ejected with a certain velocity downward. Why it gains a velocity? Just because of the burning process, it is ejected out with a higher speed, and because of this thing moves up. The velocity of this thing is increased in this direction because the fumes are ejected in the opposite direction. So imagine you have your rocket. So when the fumes are inside, so imagine at time t, this thing continuously is occurring. So the velocity is increasing and increasing and increasing as it moves up. So initially, if you assume, let's say the fume which was being ejected during time delta t was still inside the rocket, for example. So at time t, it had the mass of the rocket, which is capital M, plus the fumes which is ejected within delta time t. Both are still inside the rocket. Started. When the fumes are ejected, you have mass of the rocket is decreased by that magnitude, which is the mass of the fumes. Yes. Sorry? No, it's ejected during time delta t. Okay? So it's not ejected instantaneously, but we are assuming a time interval t during which a certain amount of fuel is ejected in the form of fumes. And before this was ejected, that fuel was part of the rocket. So the mass of the rocket was higher than it is now. So the mass of the rocket now is m, and the fume has a mass which is delta m. The fumes had no mass, let's say there was no mass of the fumes at time t equals to t. So imagine you have, let's say, the free space, and there is some stationary observer in free space who is measuring the velocity of this object and the rocket and the velocity, and you want to measure the velocity of the fumes. So if you have a stationary observer, the motion is along y-axis, so all the velocity it would measure would be along y-axis. So the velocity of the rocket with respect to the stationary observer at time t would be equal to v, which would be the velocity of this rocket with which it would be initially moving in j direction. So what happens after t later? At a later time, you have the velocity of this rocket is increased. So when this person measures its velocity, it would see a higher velocity, which is v plus delta v rather than v, and this would be again in the j direction, upward direction. What would be the velocity of the fumes? So velocity of the fumes, or velocity of the fuel which is ejected out of the rocket, is normally measured by the rocket. So the rocket has some meter which they can measure. So this person who is sitting in the rocket, he can communicate with the stationary observer that, okay, this is the fuel, this is the velocity with which I am releasing the fuel. But this velocity with which the fuel is ejected in this direction, VE, it is not measured by the stationary observer, it is measured by someone who is sitting on the rocket. Okay? So for this observer, this VE is in the negative y direction. So if you write the velocity of the fuel with respect to the person who is sitting in the rocket, it should equal to minus VE, where VE would be the ejected emission velocity of the fuel, and that would be in the minus j direction. That's why you have a minus over there. Now the question is, we want to find the momentum before the emission and momentum after the emission with respect to someone who is stationary, not with respect to the rocket. Yes. It's easier to do it like this. So it's easy to visualize. And normally, if someone is sitting in, if let's say NASA has launched a rocket or something, they would monitor it from here, not from the rocket. That's what they normally do.
So you would like to see, okay, how much has your velocity increased at this distance, at a later time, and so on. So the question now is what would be the velocity of this thing which is ejected with respect to the stationary observer. We know the velocity of this with respect to the rocket, but we don't know the velocity of this with respect to the stationary observer. So we already know, we did this a few times here. If you have a moving reference and you have a stationary reference, so and something is moving, let's say you have a stationary and you have a moving reference, and a particle is moving with a certain velocity, and you want to measure the velocity of this with respect to this. So if you know the velocity of this object with respect to this, and you know the velocity of this with respect to this, you can find the velocity of this with respect to that. So just the summation of velocities, but here you have velocity vectors. So velocity of the fuel with respect to the stationary observer, which you want to find, is equal to the velocity of the rocket with which it is moving up with respect to the stationary observer, plus the velocity of the fuel with respect to the rocket observer who is sitting on the rocket. So this is your velocity, relative velocity. So what is this? After the emission of the fuel, the velocity of the rocket with respect to stationary observer is, we already know this. What is the velocity of the fuel? We already know this, just sum them up. This would be the velocity of the fuel with respect to the stationary observer. So that is basically the velocity of the rocket minus the velocity of the fuel with respect to the rocket observer. So now we know all three velocities. Velocities before and velocities after of the rocket and the fuel. So the question is, there is nothing external happening during this time. We are in space, so there is no external force acting on it. And if such a case is there, so you have a system which consists of the rocket and you have a system which consists of the fuel. And both were initially part of the same system, but there's something happened to burn and they got separated. So you have two subsystems, or the system split into two. But those occurs because of the explosion which occurs due to the fuel, or because of the burning of the fuel, and that was basically an internal event. Nothing happened from the outside to the system. So there is no external force which is being added to the system while this emission of fuel occurs, so which means that the momentum should be conserved whenever you have an external force equals to 0. So the momentum before and the momentum after this process should be exactly the same. So this is what I have written here. The difference, this difference should be exactly equal to 0. So if external is 0. So because these two momenta are in the same direction, j, so I just replace this by scalar one. So the plus would mean that it's a positive and minus would mean it's a negative. Yes. Sorry? So you are asking what happens in multi-stage rocket. So in multi-stage rocket, what happens is not only fuel is separated, but a whole portion of this thing is separated. So you get an even bigger kick upwards when that occurs. लेकिन वो तब सेपरेट होता है जब आपका फ्यूल पूरी उस कंपोनेंट का पूरा फ्यूल है वो कंज्यूम हो जाए, तब वो सेपरेट होता है। जब वो खाली होता है वो इतना मास नहीं होता। Okay, so this is your final momentum minus this is your initial momentum. ठीक है? So final momentum is the mass of the rocket जो left over रह गया था after the fuel was ejected multiplied by its later velocity plus जो fuel की velocity है, fuel का mass है multiplied by its velocity, और ये दोनों मैं measure कर रहा हूँ with respect to stationary observer minus initial mass जो था m plus del n था into initial velocity. This should be equals to 0. So open up the bracket. What I see is so this is what I've just opened up the bracket, and this whole thing should be equal to 0 क्योंकि difference जो है आपका 0 आना चाहिए. So this thing cuts with this thing. With this thing, del mv cuts with this, and there's this term here जहाँ पे आपके पास दो small quantities हैं, change in mass and change in velocities, and both are small numbers, so you can approximate it to 0 that
this term is negligible. About all the other terms, they have some one number bigger and one number smaller, so overall the magnitude is higher. But this one has both numbers smaller, so we can ignore it. This is the only approximation we are going to do in this exercise. So this is what you are left with is this equation. And this is an equation of which involves the mass of the rocket, which is there, the change in the velocity of the rocket, minus the mass of the fuel multiplied by the emission velocity of the fuel. This should equal to 0. This is called as rocket equation. And we have to find out what does it mean. So, if I assume that this emission was occurring during a small interval of time, so I can replace delta T by dt. So all the quantities which are in del means a change, they would be can be represented in terms of T rather than del. So the change in velocity and the change in mass would be infinitely smaller as the time interval is smaller. So now this equation has two masses, the mass of the rocket and the mass of the fuel. What normally you are interested in is not the mass of the fuel which is injected, because it's hard to measure. If you fuel inject whatever mass kitna hai, it's hard to measure. But mass of the rocket is something which we can measure. So let's remove this mass of the fuel from this equation and try to replace it by mass of the rocket. What is dm means? Dm means change in the mass of the fuel. This should be equal to minus dm, where m is the mass of the rocket. If this thing increases, this thing decreases. So this is what exactly mean by this minus thing. So if I replace this here, so I have m dv plus dm dE, this equals to 0. So I have only the mass of the rocket in this equation, and this is how basically the equation is used in this form mostly. Because the mass of the rocket or change in the mass of the rocket is something which you can have a better estimate rather than kitna fuel aapke paas at that time निकल रहा है. So let's divide it by t dt rather. So you have rates now k so I've just divided by dt. So what does it tell you? K dv by dt equals to minus dE by m dm by dt. So dv by dt क्या है? Is the acceleration which the rocket is gaining in upward direction. And what does this equation tell you? That it is dependent on what? On the emission velocity. जितना ये increase होगा, जितना ये high number होगा, you would have a higher, a larger change in. So the better fuel you have, जो कि emit होने के बाद it goes out with faster speed, the better your acceleration would be. So dv by dt is the acceleration which you gain upwards. So it depends on this number, it depends on m, where m would be the mass of the rocket. जितना small mass होगा उतना आपके पास ये push loop पर लगेगा इसको to, it would be a higher number. So and it depends on dm by dt. What is dm by dt? Is the rate of change of the mass of the rocket. जितना fast ये mass change करेगा उतना ही इसको ऊपर जो kick मिलेगा it would be higher. So let's try to put in some numbers there. So if I remove dt again, so I have minus dE dm by m. So let's say the rocket started with initial mass m0, okay, and after some time the mass of the rocket was mf or the final. So the question is, if
its initial velocity was v naught, what would be its final velocity, or how much velocity would increase if a mass is decreased by such. Of course, this mass would be smaller than this mass because it started with a larger mass. So how do we do this from this equation? We basically integrate. And integrate on either side. Ve is something which is constant, because this is the emission velocity. It depends on the fuel, how good your fuel is. So, and with which velocity is injected. If the fuel is not changing, Ve is not changing. So this integration with respect to velocity, so you have initial velocity V naught, final velocity Vf. You started with initial mass of m naught, final mass is F. So those would be your integration limits in this equation. So what is this integral? This integral of this is V, and you have Vf minus V naught. This is on the left side. On the right side you have minus Ve. What is the integral of 1 over m dm? 1 over x dx integral क्या होता है? It is log, but natural log of x. This is what you have. So on this side you would have ln of m with m naught and f as the two limits. So this thing Vf would be equal to V naught minus Ve ln. So if you have ln of one number minus ln of another number, you basically divide it. That's all the rule is. So let's say if you have ln of y minus ln of x, this would be equals to ln y by x. This is another rule for natural logarithm. So you have ln of mf divided by ln of n naught. This is the result you get. Let's try to, but this is not how it's written. It's written in another form. F equals to V naught plus Ve ln this m naught and ln of are reversed. So like ठीक है, there is a minus sign. If अगर ये दो चीजें आप उलटते हो, there is a minus sign which comes with it. तो जो minus है यहाँ पे it becomes a plus then, because I have replaced m naught by mf and reversed it. So what does this tell you? Again, the same observation which we made with differential. The final velocity which it would have would depend on, of course, okay, what is the initial velocity with which it started. Let's say if it started with a zero velocity, then this thing would be a zero. Plus it depends on the emission velocity, and it depends on the ratio of m naught and mf. What is m naught and mf? This is the initial mass of the rocket, this is the final mass of the rocket. So the more fuel is consumed, अगर ज़्यादा fuel consume होगा, ratio को क्या होगा आपके? Would it be higher or would it be lower? Higher. It would be a higher number, क्योंकि mf जो होगा आपका smaller होगा, ज़्यादा fuel consume हुआ है, ज़्यादा mass बाहर गया है, इसका मतलब है this ratio would be higher. अगर this ratio is higher, it means इसका logarithmic value जो है उसकी higher होगी. What is log? Log of something. Let's settle it. It is an equation like this. So जितना bracket के अंदर quantity बड़ी होगी, उतनी आपके पास given function की value ज़्यादा होगी. So this is again it tells. So what does it tell you? It means कि अगर आपके पास, if the rocket has to attain higher and higher velocities, तो जो final mass रह गया होगा rocket का, it should be as small as possible. ठीक है? So let's say if this part of it is filled with fuel and only this part of this is the actual rocket, so this would be the ideal scenario. कि जितना ज़्यादा mass आपके पास fuel का है उतनी बेहतर है, क्योंकि because this ratio would be higher and you want higher and higher velocities. So with this I would like, so this is an example of conservation of momentum basically, and conservation of momentum is actually providing it kind of the upward thrust जिसको कहते हैं in terms of उनका जो term है, so the upward acceleration इसको जो लगती है, that's given by the conservation of momentum in this case.
कौन सी बात देखो ना आपके पास तो ये चीज आपके पास इस साइड पे गई है okay so with this I would like to finish this topic अगर कोई question है then I can answer it now कैसी the graph this ln का ग्राफ है ठीक है तो logarithmic तो ln of x ठीक है तो how does logarithmic plot depend on x जो उसके ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है तो if this number increases जो logarithmic plot है it's increasing तो इसका मतलब है ये पूरा फंक्शन इसकी वजह डिपेंड करेगी logarithmic के वैल्यू के इसके ऊपर ये रेशियो जितना बड़ा होगा आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा ओके यस तो इमिशन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्यूल बर्न होता है आपके पास जो फ्यूम्स होते हैं वो इमिट होते हैं सर्टेन वेलोसिटी और इट डिपेंड ऑन व्हाट जो उसके अंदर हीट और गैस और प्रेशर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दैट बर्निंग प्रोसेस उसकी वजह से वो वेलोसिटी जनरेट होती है अब द फ्यूल इज द सेम बर्निंग प्रोसेस इज द सेम सो ऑल द वे टू इमिशन वेलोसिटी विल बी आपके पास सेम तो फ्यूल जो बर्न होता है वो एक खास रेट के साथ होता है इट्स नॉट लाइक ऑल द फ्यूल इज गेटिंग बर्न एट द सेम टाइम तो सर्टेन जिस तरह कार में होता है कि थोड़ा सा फ्यूल आता है जितना 600,000 सीसी है 1000 सीसी आपका फ्यूल आएगा बर्न होगा अंदर तो इसी तरह इसका भी अपना एम नॉट क्या है हाँ क्योंकि आपको जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो ज्यादा होगा अगर आप एम नॉट हायर से इंक्रीज करते हो द एक्चुअल थिंग विल डिपेंड इनकी ये रेशो क्या है आपकी इवन अगर आपकी हायर भी स्टार्ट कर दो इंट्यूटिवली यू वुड थिंक ये स्लो जाएगा दैट्स व्हाट यू इंट्यूटिवली लेकिन क्योंकि पीछे वो फ्यूल बर्न हो रहा है सो जो फाइनल मास रह गया होगा अगर वो बहुत कम है इनिशियल से तो देन यू वुड हैव जो किक आपको मिलेगी वो बड़ी मिलेगी जितना फ्यूल कंज्यूम होगा उतना आपको किक ज्यादा मिलेगी तो जितना ज्यादा फ्यूल होगा द बेटर it is a small number okay so until now we have so with this I would like to end the discussion so and now I would like to come to another topic which is rotational motion so you might be thinking yeah rotational motion abhi tak pad rahe the and we did some example of rotational motion but the example we did were of very basic nature वो क्या थे आपके पास लेट्स से एक मास m था it was moving with a constant velocity around a center ठीक है और if this is the mass so around a certain axis the mass was moving around and this r was constant all the time and the velocity uski tangential velocity at every point it was constant all the time such a thing we call it uniform circular motion we haven't touched upon more difficult cases जिसमें आपके पास let's say ये velocity increase कर रही हो या आपके पास what's happening apart from the centripetal force जो आपके इस साइड पे है you also have a tangential force जो आपके इस साइड पे है इस पे लग रही है so let's go into more deeper into this motion कि जो rotational motion है how does it occur another complexity you can bring in कि आपके पास एक mass नहीं है one point particle है जो move कर रहा है let's say you have some complex mass ठीक है it may be let's say and you dig a hole through it and put a stick through it and then try to rotate it about this stick the whole mass so you don't have one point now you have many points which are rotating about this axis जो आपके पास जो axis of rotation है basically you have even more complex cases जिसमें आपके पास let's say
एक barrel है या a big cylinder and it is rolling on the surface. You have two motions there. You have rotation motion और rotation motion along इस axis के है जो कि बीच में से गुजर रही है इसके. Plus you have translation motion as well. So you have this. You can have this scenario. You can have this scenario. You can even another scenario is let's say आपके पास ये rotate कर रहा है along this axis and you tilt this axis of rotation. So आपके पास जो rotation होगी around this. So how do you describe all these different sort of motion? जिसमें आपके पास एक mass नहीं है, आपके पास you have a combination of masses which is rotating about a certain axis. You have not only rotation plus also you have translation. You can have even more complex that you have rotation around one axis and you change into rotation into another axis. So someone heard of the gyroscope. Gyroscope, you would be treating those sort of problems. So you can basically categorize all these problems into three different problems, rotation problems. One is called as rigid body rotation. So rigid body rotation is the simplest of this, in which let's say something like this. So you have some arbitrary mass, you put a stick to it and you rotate it about that thing. This is how your rigid rotation is. Rigid would mean that the shape of the body is not changing. The shape of the body is not changing. So let's say I have this page. Okay? I put a finger on one part of the page and I try to rotate this page around this thing. So if the shape, okay, this is not a good example because the shape of the paper is changing. If the shape of the paper is changing, it's not a rigid rotation. Like instead of a paper, if I take a steel bar, okay, steel या iron का बना हुआ है, and I put a nail through it, and then I try to rotate it, उसकी shape जो है आपके पास change नहीं होगी. So that type of motion would be a rigid rotation. दूसरी एग्जाम्पल लेट्स से अगर ये आपके पास रबर का जेली का बना हुआ है एंड यू पुट अ होल थ्रू इट, यू ट्राई टू रोटेट इट, क्या होगा उसको? ठीक है, जब रोटेट होगा इलांगेट होगा, शॉर्टन होगा, इलांगेट होगा, शॉर्टन होगा, तो यू वुड हैव नॉन रिजिड रोटेशन. सो रिजिड बाय रिजिड आई मीन जो शेप है बॉडी की व्हाइल इट इज रोटेटिंग, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज स्टेइंग कांस्टेंट. दूसरा एग्जांपल इज द सेकंड थिंग इज कि आपके पास यू हैव rotation plus translation and the axis of rotation stays constant. एग्जाम्पल ये व्हील का है, ठीक है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? अगर आप एक लाइन उसकी थ्रू जो व्हील है जो टर्न कर रहा है उसकी थ्रू लगा दो, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस होल व्हील इज रोटेटिंग. तो ये चीज मूव हो रही है लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपके पास वो कांस्टेंट रह रही है, उसी एक्सिस के अराउंड ये पूरा व्हील है वो कर रहा है. तो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग. द थर्ड वुड बी यू हैव रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन is changing as well. So it's getting difficult and difficult. The problems are getting difficult and difficult. What would be an example of this last thing? Have you seen tabletop? ठीक है, जो spinning top होता है आपके पास. So if you rotate it, क्या होता है आपके पास? So if you are a good person, you would make it rotate like this in this position for a longer time. लेकिन जब ये slow होने लगेगा क्या होगा इसके साथ? ठीक है, it would start tilting. ठीक है, जो axis of rotation it would start tilting. ठीक है, so what's happening? And this thing अगर आपने कहीं इसको like let's say floor के ऊपर hang किया, it doesn't stay normally constant. जब ये होने लगता है, it tries to move as well. ठीक है, from its position. So tabletop. So there can be like example. What about fan? Fan is which sort of out of these things? Fan move तो नहीं करता होता. It's a rigid motion.
So let's try to, so we would start with something, the simplest of this, which is rigid rotation. Which one? Third view, like you gave the thing is rotating. The axis of rotation means by like around जो mass move कर रहा है जिस center के साथ. Sorry? It's good attention. Why not? So just आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अगर कोई चीज रोटेट करती है अराउंड एक्सिस तो रोटेट करो x and y. Okay, so let's start with the rigid rotation problem. So let's say you have just the example I took of. You have a table, okay, and on table you have a steel plate, okay. You have a steel plate of some arbitrary shape, okay. Let's say I put, and there is no friction between this thing and the table. The table is completely smooth. So if I nail it down at a certain point, okay, so I have put a nail on this. What happens if I try to apply a force on this side? ये आपका support point है, and with this thing is support. ये point move नहीं होगा, but what would move? This whole thing would try to move in this. So ये चीज जो है, it would start rotating about this axis if you are applying a force in this direction. So the question is how to represent this motion. जब एक solid body move करती है, let's say a translation motion, just simple translation motion. How do you represent its motion? What you do, you basically set a coordinate axis. You set a coordinate axis. आप इसका center of mass find करते हो, ठीक है? You find its x and y component. So this would be your initial position. And if it has a certain velocity, so what would do? This point would change. For example, if velocity is in this direction, at a later point, its position vector would be something different. At a later time, it would be different. So this is how you describe a linear motion. जो आपके पास a line में एक चीज move कर रही है, it is not rotating. अब अगर कोई चीज rotate कर रही है like this, you need not only some distance, you also need some angle, some sort of angle to represent its motion. क्योंकि it's not just linear motion, it also has circular motion. So there should be some kind of angle which should be involved in your. So because if someone tells you कि आपके पास ये है, ये वाला mass है, पहले इस form में था, थोड़ी देर बाद ये इधर आ गया. How would you differentiate between these two positions? ठीक है, ये position क्या है, ये position क्या है? So that's the question basically. So what you do is, let's say this is your mass which you want to represent, इसकी position आप find करना चाह रहे हैं, and I am looking at it at this table from the top, ठीक है? तो ऊपर से मुझे ये यहाँ से आ रहा है, and this is where my support point is, and I have to represent the motion of this thing on the table or the position of this thing. So what I can do first, the first thing is define your axis of rotation. Because that's where this thing is moving around. Unless you don't know कि आपके axis of rotation क्या है, it would be hard to describe the motion, your circular motion. So this axis of rotation in this case would be passing through it. Let's say ठीक है, it's something अगर आपके पास ये चीज मूव कर रही है,
the axis of rotation would be straight through it. Okay? And this is what I plotted here. This would be your, let's say, y-axis, and you can represent it by something like this, just to denote कि ये आपके axis of rotation है, इसके अराउंड आपकी rotation हो रही है. ये प्लेन के बाहर आ रहा है, क्या? It's not okay. ये प्लेन आगे ऊपर से नहीं देख रहा, मैं साइड से देख रहा हूँ. अब एंगल क्या होगा इसके? So you define another axis. Let's say ये आपके पास x axis है. So you have defined a plane. So अगर ये चीज है, इसकी मोशन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो y axis जो है, it's completely going through from the up, ये आपकी vertical axis है, और जो x axis है, it is along the table. अब along the table जो है आपके पास ये x axis है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. How to represent these different positions? अब what you do is you pick a point on this in this mass. कोई भी point आप ले, it doesn't matter. And you want to say कि इस point की motion किस तरह की है. अगर आपके पास so one thing about rigid rotation is क्योंकि body की shape change नहीं हो रही, ठीक है, body की shape change नहीं हो रही, तो ये distance जो है it would be exactly the same at every point. Distance इस point का, let's say इस metal sheet के ऊपर आपने एक mark लगाया हुआ है, तो उस mark का distance इस axis of rotation से हर टाइम पे आपके पास सेम होना चाहिए, क्योंकि इसकी शेप चेंज नहीं हो रही. लेट्स से अगर ये आपके पास जेली टाइप स्ट्रक्चर था, तो ये शेप शायद बाहर जाता, फिर अंदर आता, बाहर जाता. इट वुड बी अ मोर कॉम्प्लेक्स थिंग. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नोट. ओके, सो व्हाट इज द ओरिएंटेशन एट दिस पॉइंट? सो व्हाट यू डू इज यू, आपके पास जो सपोर्ट पॉइंट है उससे लेके जो पॉइंट जिसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, लेट्स से जो पॉइंट P, इसके मोशन डिस्क्राइब, यू ड्रॉ अ लाइन, यू कनेक्ट दीस टू, एंड देन यू मेजर जो एंगल है बिटवीन दिस पॉइंट एंड जो आपके x एक्सिस है, दिस इज थीटा. सो इफ यू नो द एंगल थीटा, जो आपके दिस एंगल थीटा, यू वुड नो कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है. अब अगर थोड़ी देर बाद ये पॉइंट P यहाँ पे आता है, तो you would exactly know, you would have a different theta. आपके पास अगर ये यहाँ पे आता है, you would have a different theta. So if you know your axis of rotation and you know your axis perpendicular to it, and you know the angle which this body at a certain point of this body makes with this thing, you would know the orientation of this object. So unless you don't know the orientation, it's hard to say कि कहाँ पे है. ठीक है? So जिस तरह इस लीनियर मोशन में यू हैव टू डिफाइन x पोजीशन क्या है, y पोजीशन क्या है, किसी पोजीशन फाइंड करने के लिए. रोटेशन में यू हैव टू नो कि आपके पास एंगल क्या है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू अनदर एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है? तो अगर दो एक्सिस हैं यहाँ पे, अगर एक एक्सिस इट रिप्रेजेंट आपके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और दूसरा एक्सिस जो है वो आपके प्लेन के अंदर उसकी ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है. So let's try to make a table now. कि आपके पास अगर linear motion हो, आपके पास circular motion हो, आपके पास इस केस में जो displacement या position है या orientation है, it is described by position vector और x या y component जो है आपके. But in circular motion you need a theta which would be. So what happens if this thing moves up? जो theta होगा, this would be variable, वो change हो रहा होगा during the circular motion. So ऐसे बच्चे शिवरात्रि के टाके पाड़ते हैं. कुछ भी नहीं आ रहा नीचे. नीचे आगे लेना चाहिए. yes.
A point on this. That's a good point. Later on, when we studied translation motion as well, maybe this thing moves and it moves up as well. So you would need this. And also sometimes it's not. अगर आपके पास मोशन जो है इस तरह नहीं है, इस तरह है, ठीक है, किसी चीज की. I was सीधा एक रॉड है, but another rod which is moving. So you would need, आपको पूरा एक्सिस चाहिए होगा, एक पॉइंट नहीं चाहिए होगा, just to measure the distance between. Like अगर आपके पास let's say ये एक्सल रोटेशन है, ठीक है, और एक रॉड जो है वो इस तरह का है, और ये पूरा रॉड जो है वो मूव कर रहा है, you would need all the movement time. So there are more complex cases इसमें. So axis of rotation हमेशा बेहतर होता है डिफाइन करना. One, it gives you a sense of direction as well. अगर point करते हो, point doesn't give you a sense of direction. Like let's say मैं यहाँ पे point करता हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है वो ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, वो सारे एक्सिस उससे पास हो रहे होंगे. So it doesn't give you a sense of direction either. Okay, so when this thing moves, तो आपका जो चीज चेंज हो रही होगी when it moves in circular motion, वो आपकी थीटा है. So theta would be something which would be a function of time. Linear motion में जब कोई बॉडी linearly motion मूव कर रही है, तो हम उसकी जो मोशन है उसको डिस्क्राइब डिफरेंट क्वांटिटीज से करते हैं. एक उसकी पोजीशन है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया. दूसरी चीज जो है उसकी वेलोसिटी होती है जिसको हम v से डिस्क्राइब करते हैं, and we say is dx by dt. Is there something similar in circular motion? And that we already have. So we define something which is called as angular velocity, and that angular velocity is defined as three ratios. It means this is the definition. This is equal to d theta by dt. So the rate of change of this angle would tell you how fast this thing is moving. Okay? What is this number? It is the rate of change of theta. तो अगर ये चीज मूव कर रही है, फास्ट रोटेट कर रही है, तो ये थीटा जो है ये फास्टर चेंज होगा. अगर ये स्लो मूव कर रही है तो ये स्लो रेट से चेंज होगा. तो d थीटा बाय dt आपको ये रेट बताता होता है कि कितने रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है. एंड इट गिव्स यू a mean of how to measure whether it's rotating fast or whether it's rotating slow. Okay, there's another number कि अगर आपके पास let's say ये रोटेशन है, ये रोटेशन यूनिफॉर्म नहीं है, but rather उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही है और हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है. How would you represent it? So for this you need some kind of acceleration. ठीक है, इस केस में is given by a the second derivative of t, or you can write it dv by dt. इस केस में we define, so यहाँ पे इसका लीनियर में आपके पास v था, एंगुलर सर्कुलर मोशन में आपके पास ओमेगा है, which is completely representing the same thing. कितनी स्पीड के साथ मोशन हो रही है, either in linear or in circular. इस केस में आपके पास you have a quantity which is called as alpha, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. So and alpha equals to d omega by dt. और second derivative of the theta जो आपके पास angular motion है. So these are your, so you have defined these three things now. अब let's see कि आपके पास equations of motions we want to make. हमारे पास इस केस में आपके पास equations of motions थे. अगर आपके पास constant acceleration है या zero acceleration है या changing acceleration है, how we do the same thing in circular motion. So let's try to make those equations. Yes. Yes. Then we would introduce later. ठीक है, जिस तरह मोमेंटम हम ले लेते हैं.
So let's look at a case where omega is constant. अगर ओमेगा के पास कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा आपके पास? अल्फा वुड बी 0 क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा. तो दिस इज एग्जैक्टली द केस. अगर लीनियर के केस में देखो इट वुड बी a equals to 0 आपके पास. So let's try to see कि क्या है हमारे पास. Omega is constant, so omega equals to d theta by dt. So omega is something which is constant with time. Let's say omega dt dt. So this is what my equation becomes, and I can take integral on either side. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है वो टाइम के इंटीग्रल से बाहर जा सकता है. It is not depending on time, so I can take it out. So let's say आपके पास t equal to 0 से t equals to t तक this integral is. And initially let's say this body started at an angle at theta equals to 0 और जो final angle है is at theta at t equals to final time. So what would this thing be? So the left hand side is this would be theta of t minus theta at t equals to 0. So this would be your initial angle. This angle से आपने start किया था. Let's say the motion was started from here, not from theta equals to 0. So this would be your initial angle, and this would be equal to omega t. ये इंटीग्रल dt का इंटीग्रल t अगर t minus 0 is t. So you have t there. The equation है इस केस में आपके पास this equals to theta. अब theta at t equal to 0 I call it theta naught. So this would be the angle with which you started your motion plus omega t. This would be your equation. This circular motion for a case where you have omega equals to constant and alpha equals to 0. अब ये कौन सा केस है? Let's describe linear के केस में you have exactly a similar equation. ठीक है. वो कौन सी है अगला हमारे पास? x equals to x naught plus bt. तो ये पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है, ये पोजीशन है, लीनियर पोजीशन है. ये स्टार्टिंग एंगल है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है. ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है. Exactly correspond to the same thing. So you have that equation of constant of zero acceleration is there. अच्छा ये वाला केस कौन सा होगा? जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था. This is exactly the same case. Exactly the same case. We already had such an equation before. अगर आपको याद है. Okay, let's look at a different case जहाँ आपके पास alpha zero नहीं है, but rather you have a non-zero. t minus 0 t equals to टाइम 0 पे थीटा होता है. माइनस 0 कौन करता है? मैं वही कह रहा हूँ. So in which case alpha is non-zero and alpha is चुप कर. कुछ पता है? constant. मैं मरा पड़ जाता है. इसका मतलब है alpha is what? Alpha equals to d omega by dt. This is something alpha is constant in this case. I can write this thing as alpha dt equals to d omega. So if I integrate it on either side, let's say from t equals to 0 to t equals to t, or on this side omega at t equals to 0 and omega at time t. यहाँ पे जो इक्वेशन आती है मेरे पास है this omega of t minus omega at t equals to 0. This equals to alpha. Alpha you can take out of integral तो आपके पास dt का इंटीग्रल रहता है which is equal to t. This is called t. So omega t equals to omega naught plus alpha t. This is another equation which would be equation of constant acceleration. Okay, you have exactly corresponding equation in linear motion. वो क्या थी आपके पास? V equals to v naught plus at. Exactly similar equation आपके पास. यहाँ पे omega as a function of t है, यहाँ पे velocity. We have two other equations जो इस केस में थे. Let's try to find them as well.
क्या है? नहीं वहाँ पे कुछ तुझे भी समझ नहीं आई चॉइस कर लो क्या चीज़ करनी क्या मोमेंटम कंजर्वेशन है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू 0 तो फाइनल इनिशियल को इक्वेट किया हुआ है क्या मुश्किल है ये मोमेंटम ऑफ रॉकेट है अब आएगा मोमेंटम ऑफ रॉकेट है ये फ्यूल कंजम्पशन के मोमेंटम चेंज हो रहा है सब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है मास भी चेंज हो रहा है डेल्टा एम चेंज इन मास है समझाओ तो रहा हूँ So you have omega of t मैसी क्या वेलोसिटी से कम हो equals to क्या omega naught plus alpha t. What about d of t? How can you find del of t अगर आपके पास ये चीज़ के पास? ऊपर की तरफ जाना रॉकेट तो डेल्टा एम जो है So this should be equal to del डेल्टा at एम t equals मतलब 0 डेल्टा वी है plus तो वी प्लस डेल्टा omega of t dt from 0 to from t0 to t. अगर आपको याद हो इस तरह चेंज में इन वेलोसिटी तो if you know आपके पास v equals to v naught plus at x how to find it is equal to x naught plus बेसिकली ना वी नॉट v of t dt from 0 to t. This is exactly the same equation that I'm using here. So this equal to theta naught. This would be the angle at t equals to 0 plus omega of t. We already know what it is, which is omega naught plus alpha t dt from t equals to 0 to t equals to t. कब सबमिट करेंगे Theta naught plus आपके पास I can divide it into this omega naught dt from 0 to t plus alpha which is constant. I can take it out of integral. तो आपके पास यहाँ पे t है and dt from 0 to t. So what is this thing now? This equals to theta naught plus the first integral is omega naught t plus alpha. What is t integral? It is t square by 2. So that is t square by 2. Remember something again. Now give us x and t x naught plus and t square. So basically same. What about the third now? This is the second equation. आ गया हमारे पास थी. Remember these two equations are for this case only. जहाँ आपके पास alpha वो constant है या angular acceleration आपके पास constant. So आपके पास theta omega equals to d theta by dt and alpha equals to d omega by dt. So I can write this alpha dt equals to d omega, or from this I can write dt equals to d theta by omega. So I replace dt here. This would be alpha d theta by d by omega. This equals to d omega. So I have what? Alpha d theta by omega equals to d omega. So let me rearrange it. Alpha d theta equals to omega d omega. So this is the case for constant alpha. So alpha is a constant thing. You can integrate on either side. So यहाँ पे आपके पास initial
theta naught, theta at a certain t, यहाँ पे आपके पास omega naught, omega at a certain t. Or you can, if you don't like it, you can also make it like theta initial, theta final, omega initial, omega final. So something which you would already identify. D theta आपके पास क्या है? Integral is theta है, so this would be theta f minus theta initial or theta naught. This should be equal to omega क्या है आपके पास? Integral omega square by 2 है, so this is number 2. Omega square integral is omega f square minus omega I square. You already know this sort of equation. अगर 2 मैं यहाँ पे लगा दूँ, डेरिवेशन तो नहीं ना आएगी, तो एग्जैक्ट वही कोई है ना, लीनियर मोशन की 2 ट्रांसलेटिव मोशन x f minus x I, this equals to v f square minus v I square, exactly the same equation. So you have all these three equations of motion. जो constant acceleration के case में you can basically replicate circular motion as well. So let's take a 5-minute break. हमने एक बनाया हुआ माइंडसेट के बस क्लास में आया नहीं तो हम फ्री होते हैं। ये कोई माइंडसेट गलत है, बस अब ऑर्डर में देखिए बस सोच एक्सेस करिए, बाद में होता है उस टाइम तेरे बात सुन तेरे पापा। So we constructed all these equations. Okay, so if you have linear and you have circular cases. So linear motion where you have position or displacement and you have angular displacement or angular position. Linear where you have velocity along a certain line, and in circular you have angular velocity, how fast the angle changes or how slow the angle changes with time. With linear you have acceleration which is along the line, it can increase or decrease depending on how fast the velocity is changing, and in angular you have alpha or the change of omega or the second derivative of the theta, which is the angle basically with which is changing. So you have these equations of motion. आपके पास जो first वाली है वो केस जो हमने derive किया वो किस के लिए था? आपके पास acceleration 0 है linear केस में, velocity is constant, and this is the equation. So and this is the case जहाँ पे आपके पास constant acceleration. So you have all these tools. If I tell you कि आपके पास let's say constant acceleration है and I give you some value to let's say alpha जो है आपके पास let's say 2 radian per second है and find omega at a later time, find theta at a later time. So let's say ये वाला केस था जिसको हम स्टार्ट में डिस्क्राइब किया था। अगर आपके पास इनिशियल एंगल पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, can you find the final orientation or the final velocity in the final at a later time if you know the acceleration value? So you can basically do it via these equations. Can I have quiet please? Is there a question or something interesting than this? Okay, so if you know the initial value, you can know the final value once you know क्या आपके पास acceleration क्या है. This sort of thing is called as kinematics. Kinematics means कि you are just describing motion. You are not describing कि motion कहाँ से आ रही है. You are not applying any forces here. ठीक है? कोई force अभी तक हमने apply नहीं की इस equation को करने में. We just say कि आपके पास change हो रहा है theta, change हो रहा है omega, और वहाँ से आपके पास acceleration आ रही है, वहाँ से आपके पास velocity आ रही है. But we didn't know कि अभी तक हमने ये नहीं किया कि what happens if I apply force on this body. ठीक है? So let's try to do that. This is called as dynamics or rotational dynamics. So do this I would slightly introduce rather than this I would make a simpler of, let's say you have a mass m and which is connected with a point with a rod. Let's say this rod is a rigid rod, okay, and it's massless. And let's say this A is your point at which it is rotating. So यहाँ पे आपके पास जो nail लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है. And your axis of rotation would be somewhere here around this point. So this thing can move around this point. And
थोड़ा सा मैं okay whatever. Let's say this thing is on a table, ठीक है, and this thing can move around this on the table, ठीक है, axis कोई नहीं बनता. जो axis of rotation इस केस में क्या होगी आपके पास? Axis of rotation would be straight through it, ठीक है, क्योंकि it can rotate around this point. ये आपका टेबल में पड़ा हुआ है. What if I apply a force on it, on this mass? Let's say I apply a force in this direction. What happens? Rod जो है rigid है, it's not elongating or anything. Would anything happen अगर ये? Nothing would happen. There would be no circular motion. What if I apply a force in this direction? What would happen? Again nothing. क्योंकि ये rod rigid है, it would resist any motion in this, any force in this direction. What if I apply a force in this direction? What happens? It can rotate about this support point. ठीक है? So what it would do? It would try to move in this direction. And because it is fixed here, it would kind of start a circular motion. So starting from zero velocity, it would gain some velocity in that direction. So what would be that velocity which we would gain in direction? It would be tangential or क्या होगा इसके साथ? Would it be tangential or would it be radial? Tangential क्या होता है आपके पास? जो आपके पास जैसे जो सर्कल है, mass है. This is tangential velocity and this is radial velocity. अगर आपके पास let's say इधर है, ठीक है? Normal uniform acceleration you don't have radial velocity, you only have tangential velocity. What you are doing here is you are applying a force और इस डायरेक्शन में आपके पास कोई velocity नहीं किया गया, but you are creating velocity in that direction. वो किसकी वजह से हो रही है? Force की वजह से हो रही है. But you have another thing here जो आपके पास tension है in the string which is applying a centrifugal acceleration. तो आपके पास दोनों velocities हैं इस केस में जब ये rotate करता है. Any question there? कौन से नॉर्मल केस में? क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रहा होता है उसमें सिर्फ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. यहाँ पे आपके पास फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है. तो इसमें आपके पास दो फोर्सेस हैं. एक फोर्स ये जो आप इस तरह लगा रहे हो, एक फोर्स जो टेंशन है इस रॉड के अंदर. क्योंकि अगर आप इसको इधर फोर्स लगाते हो, ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ये रॉड इट वुड पुल इट बैक, सो इट वुड हैव टू फोर्सेस. You will see, it depends on top. Okay. अच्छा, अब let's say this is one scenario. So what's happening to the force? Force is producing some circular motion. So it means that I have to apply a force in this direction. I can't apply a force in that line. Only then I will have circular motion. What if I apply a force here on the nail? जो यहाँ पे जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा? आपके पास मोशन नहीं होगा unless you uproot whole thing altogether. ये आप उसको उखाड़ दो, nail आपको लगा हुआ है, there would be no motion. What happen if I move this force slightly this way? अब क्या होगा आपके पास? आपके पास ये रोटेट करेगा नहीं करेगा? It would rotate, but it would rotate slowly if you apply a force here. What if I apply a force here now? It would rotate faster, and if I apply a force here, it would rotate the fastest again with the same amount of force अगर मैं apply करता हूँ. So what does it tell you? कि अगर आप force apply करते हो and force is causing circular motion of this thing, तो वो circular motion, उसकी speed you create with that motion, with that force, या जो acceleration you produce with that force, it depends on two things. It depends on the component of force which is perpendicular to the line joining the support and this mass. ये line है ना आपके पास. Okay, so अगर let's say ये आपका A है
और ये आपका मास m है, तो रॉड है। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा वो हमेशा उस फोर्स कंपोनेंट से होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इफ यू हैव दिस फोर्स, इसके आपके पास दो कंपोनेंट है, लेट्स से एक पैरेलल कंपोनेंट है टू दिस लाइन, और वो लाइन क्या है आपके पास, व्हिच इज जॉइनिंग दिस पॉइंट जहां से वो रोटेट कर रहा है टू द, एंड इट्स कनेक्टिंग दिस पॉइंट टू द मास जो कि रोटेट कर रहा है आपके पास। You would have two component of forces, a force component which would be perpendicular to that line and a force component which would be parallel to that line. And if you know this angle जो आपके पास इन दो लाइंस के बीच में है, so you can find f component, f parallel perpendicular क्या होगा आपके पास, it will be f sin of phi होगा आपके पास, ठीक है। So and f parallel क्या होगा, that would be f cos of phi। तो जो कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, only that component would initiate a circular motion। जो पैरेलल है उस लाइन के, it would not do anything। So this is an important thing to know। दूसरी चीज क्या है, it depends on कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो इस फोर्स को, whether you are applying it here, whether you are applying it here, whether you are applying it here। तो सबसे ज्यादा सर्कुलर मोशन तो जहां से लेट्स से जो सपोर्ट पॉइंट है, जितना उससे आप दूर जाते हो, अगर क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन है वो आपके पास ज्यादा होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। सो यू हैव टू थिंग्स, आपके पास f component of f perpendicular to the line joining, let's say इस पॉइंट को मैं a कहता हूं, a and m multiplied by the distance between a and the point at which force is applied, ठीक है, at which force is applied। ये दो फैक्टर्स हैं which contribute to circular motion। तो जो टोटल सर्कुलर इफेक्ट होगा, सर्कुलर मोशन होगा, it will be a product of these two, and this product has a certain name to it, and it is called as torque, ठीक है। तो टॉर्क मींस अगर टॉर्क ज्यादा है, इट मींस यू आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर सर्कुलर मोशन। तो जो क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर मोशन आप किसी फोर्स की वजह से क्रिएट कर रहे हो वो ज्यादा है, और वो डिपेंड किस चीज पे कर रही है, वो इस पे कर रही है कि आपका जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन जो फोर्स का कंपोनेंट उसके पैरेलल है, एंड इट डिपेंड ऑन कि वो फोर्स अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो, whether you are applying this force there or there or there or there। तो ये डिस्टेंस आपके पास जितना हायर होगा, it would have more circular motion here। And so component of F perpendicular to the line joining A and N। Yes। It's just any external force which acting on the body। तो जैसे ये मैंने केस किया था, यहाँ से it can be a combination of two, it can be in any arbitrary direction, ठीक है। फोर्स जहाँ पे ये मैंने लगाई है, अब इसका ये वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल है या रेडियल है? टेंजेंशियल है। ये वाला कंपोनेंट क्या है? रेडियल है। सो जस्ट रेडियल इज प्रोड्यूसिंग एनी सर्कुलर मोशन, so it means that only tangential component जो होगा उस सारे फोर्स, तो चाहे फोर्स किसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, लेट्स से इट कैन बी एनीथिंग, लाइक फोर्स इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है, व्हाटएवर डायरेक्शन में है, यू जस्ट टेक द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द रेडियल कंपोनेंट एंड यू ओनली कंसीडर द टेंजेंशियल कंपोनेंट इन योर कैलकुलेशन। पैरेलल कुछ नहीं करता क्योंकि वो T से वो बैलेंस हो जाता है, जो रॉड के अंदर वो T है इन दैट केस। जो अपोजिट जा रहा है, it would
external force. This is an example of it. My hand is applying a force on this and it rotates around this axis. Okay, this is an example. Okay, so what happens अगर आप let's say जब आप swing करते हो, ball लगा हुआ है, initially we assume कि आप क्या कर रहे हो? The force you are applying is always towards the center. लेकिन क्या होता है जब आप start करते हो उस वक्त क्या होता है? जब आप start करते हो इस motion को, वो सर्कुलर मोशन पहले से तो नहीं होता, यू हैव टू स्टार्ट इट, और उसको किक स्टार्ट करने के लिए यू गिव इट अ टेंजेंशियल पुश. ठीक है, अगर आप लाइक इफ यू एक्सपीरियंस इट, यू जस्ट डोंट, अगर आपके पास लेट्स से मेरे पास एक रोप है, मैंने इधर पकड़ा हुआ है, नीचे मास है इसके, ठीक है, सस्पेंडेड है, अगर इसको ऊपर खींचता हूं वुड इट स्टार्ट एनी सर्कुलर मोशन? नहीं, इट वोंट. ठीक है, सो अगर मैंने सर्कुलर मोशन स्टार्ट करनी है, आई हैव टू गिव इट अ पुश इन दिस डायरेक्शन एंड ओनली देन इट विल स्टार्ट. ठीक है, जो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होती है, यू नीड अ टेंजेंशियल कंपोनेंट टू स्टार्ट इट. अब अगर एक दफा स्टार्ट हो जाए, लेट्स से इट कैन बी सस्टेन्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी टेंजेंशियल फोर्स. नो, हमें क्या पता है जब मैं ये करता हूँ, इसको करता हूँ, यू आर अप्लाइंग बोथ एट द सेम टाइम. यू डोंट फील इट बट यू आर अप्लाइंग बोथ एट द सेम टाइम. ओके, okay, let's move on. So this is something, so torque, let's define torque in a proper way. So torque would be the effect, the circular motion caused by a force which is being applied on it. So it is represented, I would represent it by such a number tau, and in this case it's equal to what? It's equal to जो f का perpendicular component है multiplied by the distance at which the force is applied on the body. और वो distance आपके पास क्या है? Let's say this distance is r. So basically it's a product of these two things. If I know कि ये आपके पास क्या है? This is f sin phi multiplied by r. So this is your torque. This is how it's defined. You can also write it as f r sin phi. What does that mean then? आपके पास a है, मास है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई, but would that mean कि आपके पास ये r है, you have this line on which this you apply a normal to it, तो ये आपके पास क्या होगा? This is theta, this would be r sin theta, and the force would be multiplied. So ये आपके पास थीटा है, this is theta, this is theta. It is phi है, theta नहीं है, sorry. थीटा तो जो दूसरी चीज. ठीक है, तो either you can write it in this way. In this way it would mean कि f का जो ये वाला component है multiplied by r, or you write it in this form, which would mean कि you don't take a component of f, but you take a component of r which is perpendicular to f. So this would be a component of r which is perpendicular to f. So in both cases the torque would be the same. So the question is, can we connect this torque to this tangential acceleration which I was talking about, which you produce there? So torque के पास क्या है? This is f t into r
ये क्या है आपके पास, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू r, ये आपके पास r है, ठीक है। अब दिस वुड क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, और वो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, इट वुड बी एक्सेलरेशन इट वुड क्रिएट वुड बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा इस फोर्स की वजह से, देयर वुड बी अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। अब दिस थिंग वुड बी इक्वल टू m multiplied by a tangential, so I can write is that this equals to m a tangential multiplied by r. This is what the torque would become. A question is, can I a torque or alpha, can I have a relation between these two? So let's have this is a, this is mass m, force apply over इस direction में, so you have a displacement, a small displacement in this direction, tangential acceleration. So ये जो displacement है, let's say this displacement is d theta angular, और ये वाला distance it travels in this direction is del s, ठीक है। अब del s जो displacement है इस direction में, this equals to r, ये r है radius with which, is there a question? No. Okay. This is what you have. Okay. Let's take a divided by del t on either side. अब अगर rigid rotation है तो r change नहीं हो रहा आपके पास, ठीक है। So r is constant. So you can take r as constant and then multiply dt by dt. So this would be. अब ये चीज मेरे पास क्या है? This is, अगर मैं इसका लिमिट del t टेंड्स टू 0 लेता हूँ, दिस वुड बी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? रेडियल वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट वुड बी टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस वुड बी इक्वल टू r। ये क्या है आपके पास? दिस वुड बी ओमेगा, ठीक है। दिस इज वी ऑलरेडी नो, दिस वी ऑलरेडी नो, क्योंकि v इक्वल्स टू r ओमेगा में ऑलरेडी जो वेलोसिटी लगा रहे थे हम, this was a radial velocity. So what does it mean कि अगर आपके पास ओमेगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को क्या होगा? मिड का क्वेश्चन। So let's say something is, अगर ये पूरा रोड मूव कर रहे हैं अराउंड दिस विद अ कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज योर सपोर्ट पॉइंट जहां से वो रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी? इसलिए मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है स्मॉल, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है। दिस इज व्हाट दिस थिंग मींस बेसिकली, v इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर ये पूरी चीज जो है वो एक ही वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है अराउंड दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैड। अब लेट्स टेक del t ऑफ दिस थिंग एज वेल। लेट्स से अगर आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे लेट्स से अगर ये इनिशियल आपके पास क्या था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी आपके पास। तो यू हैव अ चेंज इन Vt as well, so you have del Vt, or you you just take a derivative of d v by dt on the other side. This is radial पे सर, you don't have any radial there. वो आपको उसके लिए वो टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। Okay, change in radial velocity, टेंशन फाइंड करना पड़ेगा जो रॉड के अंदर है। Yes. Del t equals to 0. क्या चीज? ये t है, which means टेंजेंशियल है। Okay, अगर इस टेंजेंशियल का मैं टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती है आपके पास। On the right side आपके पास क्या आता है? R alpha. So this is the relation between जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है अल्फा है, जो आप रेडियल एक्सेलरेशन आप क्रिएट करते हो, आप प्रोड्यूस करते हो। लेट्स ट्राई टू फाइंड tau इन देयर। tau आपके पास क्या बन जाएगा?
tau would be m multiply by 8 perpendicular या 8 tangential है. T उलट हो गया. Okay, so you have m 80 आपके पास क्या है r alpha multiply by r with this. So this tau is equal to what? m r square alpha. ये आपके पास इक्वेशन आती है किस चीज की? जब आप फोर्स या टॉर्क अप्लाई करते हो एंड यू क्रिएट सम एंगुलर एक्सेलरेशन. Does this remind you of something? F equals to ma. लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास? फोर्स है. राइट साइड में क्या है? mass है, which is inertia multiplied by the acceleration you produce due to those forces जो आपने लेफ्ट साइड में अप्लाई किए. अब अगर आपके पास इनर्शिया ज्यादा है तो एक्सेलरेशन आपके पास कम प्रोड्यूस होगा. अगर आपके पास इनर्शिया कम है तो आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा. दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन मीन्स. Why I didn't use? Because from linear I know कि अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन मिलेगी. और वो एक्सेलरेशन कौन सी है? दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. No, just for a small amount of time. यही तो मैंने डिफरेंशियल लगाया था. I just took for a small time. The small time कि you can approximate this circular motion as linear. This is the basic approximation. अच्छा, what does this thing on the left hand side mean? टॉर्क क्या कर रहा है? आपके पास एक फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू सम नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. एग्जैक्टली द सेम चीज है यहाँ पे. अब ये चीज क्या है आपके पास? दिस इज इनर्शिया एज वेल. अगर ये चीज आपके पास ज्यादा होगी आपके पास अल्फा जो क्रिएट होगा फॉर द सेम फोर्स इट वुड बी लेस. अगर ये चीज आपके पास कम होगी तो आपके पास. So this is an inertia for circular motion. So let me write it. Tau equals to m r square alpha. This is inertia for circular motion, and this is called as rotational inertia. And it has a certain name. We call it I. This is equal to mr square. What does this thing tells you? How difficult it is to rotate a certain object about a certain point. ठीक है? अब there's a यहाँ पे आपके पास m. There is no reference to m. What do I mean by this? आपके यहाँ कोई point जानना जरूरी नहीं है about which a linear motion is occurring. तो जहाँ भी हो रही है it's exactly the same. m कहीं भी same. लेकिन इस inertia के लिए you need to know कि force कहाँ पे apply हो रही है, क्योंकि r is telling you कि आप जो axis of rotation है इससे कितना दूर हो. ठीक है? So imagine आपके पास ये support point है और ये mass जो है इसको आप कर रहे हो. ठीक है? तो अगर आपके पास अगर mass यहाँ पे है, ठीक है, आपके पास r ज्यादा है. अगर यही मास आपके पास यहाँ पे होता तो आपके पास r क्या था? कम होना था. तो इनर्शिया इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है आपके पास? अगर मैं m को यहाँ से यहाँ लेके आऊँ इनर्शिया डिक्रीज होगा क्योंकि आपके पास r जो है वो डिक्रीज हो रहा है. और जब r डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है. और ये चीज आपके पास इट वुड अगर आपके पास उतनी फोर्स लगाते हो जिस तरह इस पॉइंट पे लगाते हो तो यहाँ इसको रोटेट करवाना मुश्किल होगा, यहाँ पे इसको रोटेट करवाना आसान होगा. ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ड्यू टू फोर्स. टॉर्क कम होगा. दिस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क यू वुड हैव. अगर आप यहाँ पे टॉर्क लगाते हो यहाँ पे टॉर्क लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क लगाने के लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा. यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क लगाने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो यू हैव सेम टॉर्क लेट्स से हियर एंड सेम टॉर्क देयर. तो आपके पास यहाँ पे जो
जो इनर्शिया है दैट्स हायर लेस देन यहाँ पे, ये वाला आसानी से मूव करेगा, ये वाला मुश्किल से मूव करेगा. So this thing is something which is called as rotational inertia, and it tells you how difficult it is or how easier it is to move an object. जिस तरह इस केस में आपके पास मैथ्स ये बता रहा था how difficult it is to move an object. Yes. क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे नहीं, अगर आप R कम रख रहे हो तो फोर्स आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी to have the same amount of torque. जहाँ पे R ज्यादा है you have to have less force to have the same amount of torque. ठीक है? अब so you don't have to only think about forces, or you don't only have to think about masses. Now you have to think about the rotational effect of masses. ठीक है? कि रोटेशन फोर्स तो आपने रोटेशन में सोचना होगा कि फोर्स अब सिंपल फोर्स नहीं है, फोर्स अब आपके पास टॉर्क की फॉर्म में है, और उसमें आपके पास डिस्टेंस भी है, उसमें आपके पास फोर्स भी है. ठीक है? तो व्हेन यू थिंक ऑफ फोर्स, जस्ट डोंट थिंक ऑफ फोर्स, नॉट थिंक ऑफ द टॉर्क. उसमें आपके पास फोर्स भी है, उसमें आपके पास डिस्टेंस भी है. इसी तरह मैथ्स में आपके पास सिंपल मैथ्स नहीं है, उसमें आपके पास डिस्टेंस भी है, उसमें आपके पास मैथ्स भी है. ऑफ कोर्स जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतना डिफिकल्ट होगा इसको मूव करना, जितना आर बड़ा होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा मूव करना. यस यस द सेम थिंग. हाँ, तो अगर आप बुक में पढ़ते हो, इट हैज डिफरेंट नेम. दिस थिंग जो mr² है, इट्स कॉल्ड इनर्शिया फॉर सर्कुलर मोशन, इट्स रोटेशनल इनर्शिया, एंड इट्स तीसरा नाम क्या होता है आपने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज So, how to find moment of inertia? It's like, let's say आपके पास आपके पास एक से ज्यादा masses हो, what would be the moment of inertia of this whole system? अगर इसके अराउंड इसने, this is where it has to move around. This would be m1 r1 plus m2 r2. This would be the total moment of inertia of this whole system. ठीक है? Straight. जी? Okay. What would be the moment of inertia of something which we already? आपके पास एक रॉड है और रॉड को आपने मूव करवाना है अराउंड दिस एक्सिस. व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिंग? So what you do again? You divide into small masses. ठीक है, आपके पास del and I है. Let's say आपके पास इस पोजीशन पे आपके पास ये मास है, and this is the distance of this small mass from the axis of rotation. तो जो I होगा वो आपके पास क्या होगा? That would be del m1 into r1 squared plus del m2 r2 squared plus del and I squared, so on. Summation I then I here I equals to 1, and so let's say आपने 1 to n तक you divide by, okay, and you can write the same thing by r square dm. So this is the integral you use अगर आपके पास, अगर उस तरह का ऑब्जेक्ट हो जो आपने मूव करवाना हो, लेट्स से इस तरह का ऑब्जेक्ट है, what would be the moment of inertia of this thing?
around this axis. So you have to integrate for all the masses. तो आज के ट्यूटोरियल में we will see a couple of examples कि किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. So this was